थैंक यू फॉर जॉइनिंग अगेन। असाइलम एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, वी ऑलवेज लुक इनटू इट एंड वी डिसाइड एज टू दैट इज़ द रीज़न वेयर वी फाइल एंड वी सी इट एज अ कैच ऑल प्रोविजन। हम कहते हैं कि असाइलम को फाइल कर दें जब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता। दैट्स नॉट द केस। असाइलम आपको उस वक्त फाइल करना चाहिए जब आपके डेड कमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। And the reason because asylum is an extraordinary remedy. Asylum में आप कह रहे हैं कि जी I have fear of returning back to my home country. Now that has to be based on certain well-grounded reasons. और आपकी कहानी जो है that is purely based on you. कुछ ऐसे मौके हैं जहाँ मुझे देखने में मिला है कि people come to attorneys and they say you know what we want to file an asylum. आप खुद ही कर दें, कहानी भी आप ही लिख दें, पता है ना आपको, विल जस्ट डू दैट। प्लीज़ डोंट डू दैट, दैट्स गोइंग टू हर्ट यू इन द लॉन्ग रन। एंड द रीज़न इट्स गोइंग टू हर्ट यू इज़ बिकॉज दैट स्टोरी रिलेट्स टू यू। ऑफिसर्स इस हद तक जा रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि ये जो असाइलम की पूरी फॉर्म था, ये पूरा वो क्या आपने ख़ुद भरा? अगर आप कहते हैं येस आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश और मैंने खुद भरा तो सो एंड दैट्स वेल फाइन। अगर आपने नहीं भरा तो व्हाट दे वांट टू सी इज़ दैट वाज दिस एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन व्हाट यू डिक्टेटेड, जो बातें आपने की थी टू योर अटर्नी, नॉट टू समबडी एल्स। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एज वेल। एंड नॉट ओनली दैट, द ऑफिसर्स ऑल्सो आस्क कि जी जब ये फॉर्म सारा कंप्लीट हो गया था और ये फॉर्म सबमिट होने वाला था, क्या उससे पहले उस एप्लीकेंट ने उस फॉर्म को रिव्यू किया, उस फॉर्म की सारी डिटेल्स को पढ़ा, उन्हें एक्नॉलेज किया? वाई? बिकॉज दे वांट टू लुक एट डिस्क्रिपेंसीज, दे ऑल्सो वांट टू लुक एट द फैक्ट कि वेदर इट इज़ कमिंग फ्रॉम यू नॉट फ्रॉम समबडी एल्स। एंड द प्रॉब्लम दैट वी सी इज़ मैनी अ टाइम्स, अगर आपने उस केस को फाइल नहीं किया या आपने किसी और से कहा कि मेरी कहानी लिख दो, गेस व्हाट, दैट पर्सन हैज़ नॉट डन ओनली योर केस, उन्होंने और बहुत सारे केसेस किए हैं। और उसमें होता ये है कि जब एक ही जैसी कहानी बार बार कहीं जाती है, इट्स वेरी ईजी फॉर द ऑफिसर्स टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट योर पर्टिकुलर स्टोरी। So even if you say that I belong to a particular religion और दूसरा religion मेरे खिलाफ है, आपका ground, आपके core reasons तो वही हैं, लेकिन the facts of yours are very particular to you. आप किस मोहल्ले में रहे थे, किस शहर में आप कॉलेज गए, आप काम करते थे, आपको whenever you went to certain aspects of your business, of your job, of your school, आपको क्या hardship face हुई, those are very particular to you and those are the distinguishing features. So please do not rely on somebody else कि जी हम वहाँ चले जाएंगे and my job is only to give the money, बाकी कहानी लिखना उनका काम है। That is not the case. It is your job to look into each and everything. So often what I also recommend for people who are applying for asylum is don't only look at the fact कि जी हम asylum file कर रहे हैं and that's it. It is a big undertaking and it has to be grounded on the particular facts which you can allege. You can not only give evidence but also support, because at the time of the evidence the officer is looking at your eyes, at your body language, और वहाँ से वो determine कर रहे हैं कि आपकी बात में कितनी अहमियत है। So be confident what you're doing, be reliable on the documents that you're submitting, and then only proceed. If you feel you don't have it, don't do it, because now is not the time. When you submit some documents, because there are two areas, one is a green card through marriage and the other is through asylum. अगर आपने यहाँ पे कहीं कोई गलत बयानी की, they hit you with a fraud and with a bar for any future immigration. So that's not something you want to do. And that is going to hurt you in the long run. So in the US, don't look at short-term benefits, because short-term benefit is what you're getting in today. But what you ought to be looking at is what am I getting to have in the long run, because that is going to affect you for times to come. It is an endeavor, it is a task. Gather your documents and that's the only way you're able to work it on. You may be able to gather some evidence which is overall for every person, right?
if it is based on gender, on your relationship in a particular social organization, in a political group, all that is separate. But then at the same time, what you need to focus on is that the facts, they pertain to you and only you. Only then you're going to get a strong, credible case, which is going to be beneficial for you. We try to do that, so don't rely on notarios, don't rely on a friend, on a neighbor, on somebody else who has done it and who's doing it for cheaper amount, because at the end of the day, it's not about the money. It's more about the value that you have put in your case. So it's your life. Don't rely it on somebody else. Focus it in a way that helps you. If you need our services for any of the things, you know where to contact us. Our goal in these videos and in other social media platforms that we do is so as to educate you. Regardless of whether you are a client or not, if you like this, what we are talking, please spread this among your friends, among somebody. Our goal is that somebody ought to benefit out of this. And if somebody benefits, regardless of that person actually comes to us or doesn't come to us, that's worth it. So take care of yourself, take care of the documents that you submit, take care of the things that are in your control, and don't keep them for somebody else. Thank you for tuning in. Bye for now. Your attorney, your immigration ally.